नमस्कार दोस्तों, आपने ये न्यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी अभी कुछ ही टाइम पहले। क्या है ये खबर और कहाँ कौन से ऑनरेबल हाई कोर्ट का है ये फैसला, मैं आपको अभी ले चलता हूँ उसकी तरफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, लेकिन होता क्या है कि अक्सर न्यूज़पेपर में ये खबरें जब छपती है उसके बाद जो है फिर ये ना न्यूज़पेपर की आइटम मिलती है, ना ही इसमें जो खबर छपी हुई है वो किस जजमेंट से रिलेटेड है उसमें भी, क्योंकि इतना डिटेल में ब्यौरा नहीं दिया था तो एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस जजमेंट को ढूंढना। लेकिन मैं अब यही कर रहा हूँ, जो भी न्यूज़ आइटम पड़ी हुई है उनके बेसिस पे जो भी जजमेंट्स हैं उनको सर्च करके फिर मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये काम आए और आपको ये खबर भी ध्यान में आ जाए कि आपने पढ़ी थी कहीं पे। तो मैं ले चलता हूँ आपको सीधा इस खबर की तरफ और इस जजमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने व्यू आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर है नहीं है। तो यदि आप मुझे बता सकते हैं ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उस रेशियो में सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इस न्यूज़ की तरफ कि क्या न्यूज़ है और कौन से ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। तो इन ए वाइल वेट फॉर ए मिनट प्लीज़। और जी ये है, ये है जी वो जो है जजमेंट है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें जो पैरा 2 में ये फैक्ट्स है। इनफैक्ट द रिस्पोंडेंट हेयर इन क्लेम्स टू बी एन एब्सोल्यूट एंड सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बियरिंग सो एंड सो सो एंड सो। ही फाइल्ड ए सूट फॉर eviction against the defendant, that is his daughter-in-law. A decree of possession with damages equivalent to the market rent of the alleged legal possession was passed against the appellant, and also a decree of permanent injunction to restrain her from cheating creating any third party right in such property. It is submitted after the marriage of the son of the respondent with appellant in the year 2003. Both were residing together with the respondent firstly in property number so and so, and thereafter they shifted to suit property when it was purchased in the year 2004. It is the case of the appellant, she being a legally wedded wife of the respondent's son, has been residing with her two minor daughters in one room with an attached bathroom and a balcony in the suit property marked in the site plan. तो ये जो जजमेंट है इसमें अगर आप गो थ्रू होते हैं तो इसमें ये ही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें डिस्प्यूट थे, इनके डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के काफ़ी सारे डिस्प्यूट थे। तो अल्टीमेटली जो है इन लॉज ने जो है ये सूट फाइल किया इविक्शन के लिए। और जो ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है ये पैरा 21 में वो ये है सॉरी, admittedly the house is a shared household wherein the appellant has been residing after marriage with the son of the respondent. Though an argument is raised, the husband of the appellant has not been made a party to the suit, but admittedly the husband is not residing in the premises since prior to the filing of the suit, probably because the acrimonious relations between him and his wife appellant. On record, there are various complaints filed by the appellant against her in-laws, including the non-cognizable reports amongst the parties. Many of them are placed on record and goes on to show the relations between the parties are far from cordial. Even on record, there is a complaint made by her husband, namely Gunit Dhingra, who lives in a rental accommodation, against his wife, the appellant herein. More so, the son of the respondent has not claimed any right in the subject property. Thus, where shared household is admitted by the respondent, there was no need for the learned trial court to implead the husband of the appellant. Admittedly, where the parties are residing is a flat having only 3 bedrooms, a drawing room, and the appellant is in possession of the room in the said flat. Then, considering there are various complaints filed them against each other, their relations being not cordial, would it in such circumstances be appropriate for them to stay together and fight every minute of their existence? In Satish Chandra Ahuja, in para number 90, the court had observed we need to strike a balance between the rights of daughter-in-law and her in-laws.
और फिर पैरा 27 में जो डिसीजन जो आया है ऑनरेबल कोर्ट का, thus where the residence is a shared household, it does not create any embargo upon the owner to claim eviction against his daughter-in-law. A strained frictional relationship between the parties would be relevant to decide whether the grounds of eviction exist. I am of the considered opinion, since there exists a frictional relationship between the parties, then at the fact end of their lives, it would not be advisable for old parents to stay with appellant, and hence it would be appropriate if the alternative accommodation is provided to the appellant as is directed in the impugned order per section 19(1)(f) of the Protection of the Women from Domestic Violence Act, which reads as under. Thus, there is no force in the appeal, and accordingly it is dismissed. The undertaking made at bar to provide an alternative accommodation to the appellant till her matrimony exists be filed in the form of an affidavit of the respondent within 2 weeks from today before the learned trial court. The execution of decree be postponed till such suitable alternative accommodation is found and the applicant is conveniently shifted therein. The learned trial court to impose conditions in case of non-payment of rental including electricity, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा बाय द रिस्पोंडेंट। तो ये जो जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, एक यूनिक सा केस था इसमें, और इसमें जो डॉक्टर इन लॉ को ही होस्ट कर दिया लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो कौन सी ये जजमेंट मैं आपको ले चलता हूँ सीधा। ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट की है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस योगेश खन्ना है, और जो केस टाइटल है वो रवनीत कौर वर्सेस प्रीतपाल सिंह ढिंगड़ा, RFA 832 ऑफ 2018, और ये 24 फरवरी 2022 यानी कि पिछले साल का ये डिसीजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिसीजन आपके बहुत काम आने वाला है, तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है करें शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसको जो है आप लोग जो है लिंक को सेव कर लें। मैं भी इसको वैसे अपना जो एक डाइजेस्ट बनाई है उसमें ऐड कर लूँगा ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट रहे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। ओके, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।